Assalamu alaikum viewers. I welcome you all to English Buffet.5. I hope you all are doing well. So it's English time for you. Hope you all are ready. Can you guess today's target? What we are going to do today? Yes, this picture can explain you several things. You can define it in the terms of some formal and informal shoes. Yes, this is how we will move on. Today I'm going to tell you the difference between these two terms, which are formal and informal language. So, viewers, remember that in our day to day speeches, we talk either formally or informally, right? So, our communication depends on the setting where we are. ये डिपेंड करता है कि हमें सुनने वाला कौन है, हम किस जगह पे मौजूद हैं, राइट? सो इट इज़ ऑलवेज अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन. हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, वो हमेशा हमारे एनवायरनमेंट, हमारी प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग होता है. तो या तो वो फॉर्मल हो सकता है या फिर इनफॉर्मल. So, from even the students till the, we can say, elders, the users of English language, it is very much needed for everyone to know the major difference between these two sorts of differentiation of, you can say, language. पहली बात तो व्यूअर्स याद रखें कि फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो सीरियस होती है. इनफॉर्मल में वी आर अ बिट नॉन सीरियस. और जो फॉर्मल लैंग्वेज है इसकी स्पेशल वोकेबलरी है. इसमें बहुत जो है लेंथी सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं, राइट? इसमें कोई पर्सनल ग्रीटिंग्स एंड सो ऑन इस तरह से कोई चीज़ नहीं होती, जबकि ये सारा कुछ इनफॉर्मल लैंग्वेज में मौजूद होता है. दूसरी तरफ आप देखें कि हम कब कब यूज़ करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज. जैसे मैंने पहले कहा, इफ़ वी आर डीलिंग विद समवन हु इज़ नॉट फ्रेंडली एंड यू कैन से फेमिलियर टू अस, जो कि अनजान है, कोई अजनबी है, कोई हमारा इवन उस्ताद हो सकता है, इट कैन बी एनी ऑफिसर, right? The persons with whom you are not so much friendly, with those persons you can use formal language. Rather, I must say, you should use formal language, right? And there are many more settings written in front of you. You can go through them for applying some job, appearing in any sort of interview, attempting any sort of academics. We need to be very much formal. अब आ जाए, मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स ऑफ वर्ड्स शेयर करूँगी ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए. एंड आफ्टर दीज स्लाइड्स व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू ऑल शुड बी एबल टू identify the different vocabulary items in your daily speeches, कि आप कितना फॉर्मल जो है अपनी आइडियाज़ यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं, और कितना आप फॉर्मल होते हैं, राइट? सो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है. और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एट दैट पॉइंट दैट यू विल बी प्रोफिशेंट इन यूजिंग बोथ sorts of communication according to your place and person. Okay, so let's begin. देखिए, इनफॉर्मली हम ये एक वर्ड यूज़ करते हैं, a lot of. इट्स अ फ्रेज. इसकी बजाय फॉर्मल सेटिंग्स में हमें न्यूमरस कहना चाहिए, राइट? एनीवेज, नेवरदलेस, better, improved, block, undermine, blow up, explode, and break down, fail, or collapse. So don't you think, viewers, that formal words are more, we can say, refined and polished? So this is what is the fact कि जो हमारे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं वो थोड़े कैजुअल होते हैं. दूसरी तरफ जो फॉर्मल हैं, दे आर मोर क्रिएटिव, यू कैन से, वेरी मच फॉर्मल एंड रिफाइंड. जैसे कि गेट, रिसीव, बैड, नेगेटिव, सीम, अपीयर, ऑल्सो, मोर ओवर. इसी तरह से आप बाकी देखते जाएं, राइट? लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. एक सिंपल सा वर्ड है आस्क. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट वी शुड से इंक्वायर इफ़ वी आर इन फॉर्मल सेटिंग्स. इसी तरह से नीड, रिक्वेस्ट, फाइट, कॉम्बैट, यूज, कंज्यूम, स्टार्ट, कमेंस,
if we are saying sorry to someone in informal settings. For formal, we should go for apologize. अब इस तरफ देखें, I will just choose the, you can say, very prominent words like say, express. इसी तरह से लास्ट वन देखें, smart, intelligent, and second last is lucky and fortunate. This is how we can differentiate. In the same way, we will choose a few from here. Think about. For informal, it is consider and ponder. But for formal, it is think about. Worried about you, concerned about you. Settle for, choose, as soon as you can, at your earliest convenience. Speak to, address, right? Let's take a few more. Eager, avid, free, liberate, hopeless, futile. Okay. Red are, you can say, informal, whereas blue are, you can say, formal. Like stop, cease, tell, inform, verse, inferior, and so on. सो व्यूअर्स याद रखें कि इन दोनों सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं, दोनों सॉर्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, इनके सर्टन डिफरेंसेस हैं, राइट? जैसे कि फॉर्मल लैंग्वेज में हम प्रेफर करते हैं फुल सेंटेंसेस को, जबकि इनफॉर्मल में शॉर्ट। फॉर्मल राइटिंग में हमें ग्रामर और वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, राइट? वी शुड बी केयरफुल अबाउट दीज टू थिंग्स, whereas it doesn't happen in informal. In informal pieces of writing and spoken English, we are completely free to speak whatever we have in our mind. Okay, we regardless of we can say the situation going on, we hardly bother about anything and we are free to use our selection of words. Next, we can say there is no contraction. There should not be any contractions. Like if we say want to say I would, in informal we will write it in this way, I'd, right? So hope you are getting. Short forms हमने यूज़ नहीं करनी होती फॉर्मल में। इसी तरह से फॉर्मल लैंग्वेज जो है उसमें हमें हरगिज़ भी ईडियम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करें भी तो इट शुड बी फ्यू एंड फार बिटवीन, ओके, बहुत ही कम होना चाहिए। इसी तरह से फॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादातर पैसिव सेंटेंसेस होते हैं, जबकि इनफॉर्मल में एक्टिव, लाइक द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कंप्लीट। इस तरफ देखें, आई कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज़ एन एक्टिव सेंटेंस। Another difference of formal and informal languages, there are no phrasal words. Like if we are using look into in the informal language, we should say to investigate. It is formal. There should not be any abbreviation. Short forms like ASAP stands for as soon as possible. So we should avoid these abbreviations in formal language. इसी तरह से exclamation mark formal में नहीं होंगे, informal में होंगे. There should not be any imperative sentences, क्योंकि formal में ज़्यादातर जो है वो polite रिफाइंड सेंटेंसेस होते हैं, बहुत ही पोलाइट होती है फॉर्मल लैंग्वेज, राइट, फुल ऑफ एटिकेट्स एंड मैनर्स। जबकि इनफॉर्मल में द पर्सन हु इज़ द स्पीकर एक्चुअली ही इज़ कम्प्लीटली फ्री, सो ही कैन यूज़ स्लैंग, he can use the casual wordings, okay, because he is liberated here. There is no compulsion over him to use any sort of barrier, language barrier, like we can say conscious of vocabulary, grammar, and so on, right? So imperative की example देख ले, you may complete the form, and in informal it is complete the form. This is how these two are entirely different. So remember, viewers, the purpose behind this short lesson, we can say, was this, that you may be aware of your daily speeches, that how much percentage level is there in the usage of formal language and informal language.
And remember, whenever you are in the settings of you can say formalities, you have to be very much careful about the selection of your words, right? And being informal, there is no issue of considering the other language barriers. सो इसीलिए मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स वर्ड्स की आपको दी ताकि आप अपनी डेली की स्पीचेस को थोड़ा उनको कंसिडर करें और देखें कि आप कितने वर्ड्स दिन में फॉर्मल बोलते हैं और कितने इनफॉर्मल, एंड ट्राई टू शेयर दीज यू कैन से वर्ड्स विद everyone who's around you, and he likes to learn this language. That's it. Thanks for watching. If you are new to the channel, you can subscribe it to get notified. So take care of yourself till the very next lesson. Allah Hafiz.